Good morning, students. Our today's topic is endosperm, that is post fertilization events. Page number 34. Endosperm development precedes embryo development. Why? क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनने से पहले क्यों बनता है. रीज़न है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म पहले बनता है. So, the primary endosperm cells divide repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserved food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. This is the answer. The endosperm provides the nutrition to the developing embryo. In the most common type of endosperm development, the pen, that is primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस पेन जो है डिवाइड करता है, न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहा है, पर उसमें अभी वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही. रीज़न, तो उसमें मैनी न्यूक्लियाई हो जाएंगे, अभी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई. दिस स्टेज ऑफ endosperm development is called free nuclear endosperm. Abhi many nuclei are there, but cell wall formation is not still there. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. कुछ टाइम के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगी और अब वो जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर बन जाएगा, उसमें सेल फॉर्म हो जाएंगे. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. जो कोकोनट का पानी हम पीते हैं वो क्या है, वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई हैं, made up of thousands of nuclei and are surrounded by वाइट कर्नल इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म. और जो वाइट हम खाते हैं वो पार्ट है सेलुलर एंडोस्पर्म. जो बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई कोकोनट में, वो तो वाइट पार्ट बन गया जो हम खाते हैं. और जो बीच में पानी है वो फ्री न्यूक्लियर है. जो एंडोस्पर्म का पार्ट है, जो न्यूक्लियाई है, वो पानी है, और जहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई वो वाइट पार्ट बन गया. एंडोस्पर्म may either be completely consumed by the developing embryo, for example in peanut, pea, groundnut, beans, etc. before seed maturation. ये सब हैं dicots. So endosperm in dicots is completely consumed, or it may persist in the mature seed, example castor or coconut. They are monocots and be used up during seed germination. So in dicots, endosperm is completely consumed by the growing embryo, but in monocots, some endosperm remains, and that is used during seed germination. Next topic is embryo. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Embryos towards the micropylar side, egg is situated, so their zygote is formed. Most zygotes divides only after certain amount of endosperm is formed. So first endosperm is formed, then zygote start its division and forms embryo. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. इसका बेनिफिट ये है कि एम्ब्रियो को गारंटेड न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले बन चुका है तो वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. इसलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट होती है. दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर नोन एज एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स. मोनोकोटिलिडन्स कौन से होते हैं? जिनमें एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट है, लाइक कोकोनट, राइस, व्हीट. डाइकॉट्स हैं लाइक पी, ग्राउंडनट, बीन्स, जिनमें दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं. Figure 2.13 depicts the stages of embryogeny in a dicotyledonous embryo.
The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo that already we have discussed, which is shown in the figure 2.13, that zygote changes into globular embryo, then heart-shaped embryo, and then to the mature embryo. These are the different stages of embryo development. A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons, because dicot, so it has two cotyledons. A portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is known as epicotyle. जो पार्ट cotyledon से ऊपर का है उसको बोलते हैं epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. इसका end होता है plumule formation में. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle. Cotyledon से नीचे का पार्ट है वो hypocotyle है, and that terminates at its lower end into the radicle. नीचे के पार्ट में radicle, ऊपर का पार्ट plumule बनाता है. The root tip is covered with root cap. Lower part में radicle is covered by root cap, root tip, and root tip is covered by root cap. Embryos of monocotyledons possess only one cotyledon. In a grass family, the cotyledon is called scutellum. In monocotyledons, especially in grass family, this cotyledon is known as scutellum and is situated towards one side. Lateral means one side of the embryonal axis. जो cotyledon है वो embryonal axis के एक side में situated है. At its lower end, the embryonal axis has the radicle and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorrhiza. तो उसमें क्या है, रेडिकल है, रूट कैप है और उसके ऊपर एक शीट है जिसको कहते हैं कोलियोराइजा. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has shoot apex and leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called coleopatile. रूट के नीचे की तरफ पार्ट जो है मोनोकॉट्स में उसको कहते हैं कोलियोराइजा. जो ऊपर की प्लम्यूल को कवर कर रहा है पार्ट उसको बोलते हैं कोलियोपटाइल. बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं मोनोकॉटिलिडन्स में भी, बस यहाँ पे जो कॉटिलिडन है वो लेटरल साइड में सिचुएटेड है और उसको स्क्यूटेलम कह रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सीड. इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is often described as fertilized ovule. As we have already studied that after fertilization, ovule changes into seed and ovary changes into fruit. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seed coat, cotyledons and an embryo axis. What is the structure of a seed? Seed consists of seed coat, cotyledons and embryo axis. The cotyledons of the embryos are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves. The cotyledon stores food. In case of legumes, mature seeds may be non-albumous or albumous. जब सीड मेच्योर हो गया या तो उसके अंदर फूड रिजर्व होगा या नहीं होगा. Non-albuminous seeds have no residual endosperm, so it is completely consumed during embryo development. So what are non-albuminous seeds? The seeds in which endosperm is completely consumed. Example of dicot seeds, pea, groundnut, etc. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example, wheat, maize, barley, castor, sunflower, etc. Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, ruminants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is termed as perisperm. What is nucellus? In the structure of an ovule, outside the embryo sac, one layer of cells is present that is known as
nucellus that you have studied in the structure of megasporangium ovule, page number 25. Nucellus is shown. So this nucellus provide nourishment. The next part we will continue afterwards. Thank you.